friends, welcome to my YouTube channel. तो आज हम देखने वाले हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट में बार चार्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी एप्लीकेशन बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको ले लेना है एक न्यू प्रोजेक्ट, फिर लेना है आपको एम्प्टी एक्टिविटी, फिर आपको एक नाम दे देना है अपने प्रोजेक्ट का। यहाँ पर हम दे रहे हैं बार चार्ट। फिर आपको कोई भी लोकेशन पे जहाँ पे भी सेव करना हो दे देना है लोकेशन, और लैंग्वेज जावा सिलेक्ट करके फिनिश पे क्लिक करना है। यहाँ पे ग्रेडर बिल्ड होने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन बनाना शुरू करेंगे।
here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh.
आइए अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड होने के बाद आप देख पाएंगे कि ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। तो अब हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होने वाली है। तो आप देख पाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा चार्ट शो होगा। तो आप अपनी एप्लीकेशन को इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इस तरह का कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और ये दिखने में ऐसा बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो इसको आप अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं और आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।